आज we can discuss about the final topic in climatology, that is clouds and its types. तो लास्ट टाइम वो precipitation, उसके पहले एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशंस, इंसुलेशन, ऐसा बहुत कुछ सीखा है क्लाइमेटोलॉजी में. तो ये सब एटमॉस्फेयर का जो जो कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं तो जो मटेरियल्स है दैट इज अवेलेबल इन द atmosphere, उसके बारे में we have discussed. So finally, the most important thing is the clouds and its different types and how the clouds forms and how it is being classified. Yes, we will discuss it by today. So as we stated, what is a cloud? Actually, clouds are tiny water particles. It's innumerable tiny water droplets or tiny water particles. नहीं ये तो ice crystals that's combines together. वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा टाइनी एटमॉस्फेयर वो एक के साथ एक जुड़े हुए ऐसा बड़े होकर जो एक बड़ा मास बन गया है, that is actually a cloud. First there will be some dust particle होगा, नहीं ये तो कुछ salt particle होगा, उसमें when the evaporator ये आएगा तो उसमें ये droplet stick होगा, उसके बाद वो बड़ा होकर cloud बन जाएगा. So what is a cloud? It's an aggregate of innumerable tiny water droplets. Tiny water droplets है, नहीं ये तो ice crystals है, और combination of both होगा, which occurs at atmosphere generally above ground surface. ये तो ground surface में नहीं है. If it comes like that, we can say it as fog. Fog बोलेगा उसको तो, नहीं तो mist ऐसा दूसरा नाम में बोलेगा. But it is above surface, and if it is the same material made of, that is the tiny water droplets, नहीं ये तो ice crystals or the combination of two, then we can say it as a cloud. तो ये कैसे फॉर्म होगा? It is formed due to the condensation process. We have discussed what is this condensation when we tried to say about precipitation. So clouds form when the invisible water vapor in the air condenses into visible water droplets or ice. वो water vapor था in gaseous form, we know that gas is difficult to visualize, see. It is invisible है, but when it is been converting to water droplets or liquid form में, नहीं तो solid form में, when it is been converted, we can see it, and it will show, even though sometimes it will be transparent, still we can see that object, water droplets. So then we can say it as cloud. So how this clouds forms, we have already discussed it in last class also, but still it is like that. There is water vapor present in the atmosphere, that we know that. ये कैसे होगा? अभी बहुत कुछ ponds होगा, sea है, oceans है, नहीं तो जो water body है surface में, नहीं ये तो अभी पेड़ होगा, नहीं ये तो कुछ animals होगा, इन सब के अंदर पानी होगा. So what happens is, due to insolation, incoming solar radiation, there will be a process that is called evaporation. नहीं है तो if it is transferring through some object, we can say it as evapotranspiration. तो evapotranspiration होगा, नहीं हो तो evaporation होगा, जो water body से, that will be taken, that water body is being taken to the atmosphere in the form of gas. That we can say it as water vapor. So even though if we are looking at the sky, we can't see it, but there is water in the form of water vapor that is present in the atmosphere. Along with the water vapor, there are different tiny particles floating around in the air. Dust, pollutants है, बहुत कुछ है. Dust particles होगा, बहुत dust particles, sand drops होगा, नहीं है तो roca particles होगा, नहीं है तो कुछ ये सीड्स होगा, ऐसा बहुत कुछ पार्टिकल्स होगा एटमॉस्फेयर में. ये नहीं हो तो अभी ओशियनिक रीजन में उसके ऊपर होगा साल्ट कंटेंट होगा, साल्ट.
छोटा छोटा साल्ट होगा। तो ऐसा बहुत कुछ इसे बोलेगा दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एरोसोल्स। So this question can be asked, what is this aerosols? So these are tiny particles floating on the atmosphere, that we can say it as aerosols. तो ये एरोसोल होगा वाटर वेपर वो, तो दो कंपाउंड हो गया। तो ये एटमॉस्फेयर में ऐसा फ्रीली इट इज वांडरिंग देयर, तो उतना वो तो ज्यादा है उसका ये परसेंटेज। एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा, बहुत कुछ डस्ट पार्टिकल्स होगा। तो ये क्या करेगा, this will collide each other, this will interact each other, water molecules and these aerosols के बीच में जो collision होगा, water vapor and the aerosols will collide each other. तो what will be the result? एक collide हो गया तो there will be sticking. तो ये क्या होगा, ये water droplets will start sticking on this aerosols, वो aerosols में वो आकर stick हो जाएगा कोलाइड होने की वजह से, एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। वो वाटर वेपर उसमें स्टिक हो गया, दूसरा आकर उसमें स्टिक हो गया, ऐसा बहुत कुछ वाटर वेपर इसमें आकर स्टिक हो जाएगा। तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। तो वाटर वेपर तो सेटल हो गया एक चीज में, तो इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। दैट प्रोसेस, द कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर और द आइस क्रिस्टल्स, the conversion of gaseous form of water, that is water vapor, into liquid form or the solid form, water or the ice crystals. That process we can see it as condensation. So इसमें आके छिपा दिया है, तो इसका result से there will be condensation process होगा। Condensation process होने there will be lot of water droplets. There will be huge accumulation of water droplets. These bigger water droplets form around the aerosol particles. तो एक के ऊपर दूसरा accumulate होकर there will be formation of clouds. Clouds is forming like that. जो भी cloud, whatever the clouds you are seeing, whether it is in black color, whether it is white color, whether it is transparent, whether it is in gray color, all are these water droplets or the ice crystals that is being accumulated. That is called clouds. तो में ऐसा है clouds. तो clouds का different types है. If you look at the sky, you can see different skies. जैसे हम अभी बोला है different color का होगा, white color होगा, gray color होगा, black color होगा, नहीं तो transparent होगा, जो भी हो. They have been mainly divided into 4 groups. इसको तो mainly divided into 4 groups. One is cirrus clouds, then is cumulus clouds, then stratus clouds, then finally nimbus clouds. So cirrus clouds are short, detached, hair-like clouds found at high altitude. If you look, cirrus clouds is always at high altitude में है. सबसे ऊपर जो जगह है उसी एरिया में होगा cirrus clouds. वो 8 किलोमीटर नहीं उतना सा ऊपर होगा cirrus clouds. And it is almost short होगा, detached, एक पे detached होगा, एक cloud दूसरा cloud से कुछ relation नहीं होगा. And it looks like hair. ऐसा एक तो hair का जैसा extension इसका होगा ये cloud का. That kind of clouds we can say it as cirrus clouds. Then comes the cumulus. So cumulus accumulation. तो accumulation है, ऐसे accumulation होगा. That kind of clouds. Cumulus clouds are detached है, individual है, in the form of cauliflower. There will be accumulation of water moisture in the form of cauliflower जैसा एक shape होगा. That is why it is cumulus. Accumulation, cumulus वो match करेगा. Cauliflower shape का होगा. And clouds form usually spotted in fair weather में. ये cumulus clouds usually represent a fair weather, अच्छा weather. जब there is a good weather, there will be cumulus clouds. But not always. There is possibility of changing that to storms also later on. That we can discuss. Then comes the stratus. So stratus
from the name itself, there will be strata, 1 layer, 2 layer, 3 layer. There will be layers of strata will be there. That kind of clouds we can say it as stratus clouds. So stratus clouds are low level clouds. Low level mein nahi hai ye, so this can be visible in middle layer also, but it will looks like layers in the and horizontal layer. This forms the horizontal layers with a uniform base. ऐसा है. एक हो गया hairy shape में, दूसरा हो गया cauliflower shape में, और तीसरा हो गया layered structure में. And finally the nimbus clouds. Nimbus clouds, no doubt it is the rainy cloud. Nimbus clouds जो भी form में है, we can say that it will cause precipitation. So nimbus, usually the black colored clouds that is visible in the atmosphere, that we can say usually it is actually the nimbus clouds. So nimbus clouds हो गया that produce precipitation. So these are the 4 major type of precipitation. One is cirrus clouds. Cirrus in the form of hair-like structure है. Then cumulus in the form of cauliflower जैसा structure है. There is stratus है. Stratus, there will be strata, layered structure होगा. And finally the nimbus. So these are the major type of clouds. This may ये सबको अभी cirrus को cumulus के साथ भी ये दोनों mix करके होगा, stratus के साथ में होगा, nimbus के साथ में होगा. This will mix up. So based on that also there is different types of clouds, but when we say individual clouds, the major clouds, you can say cirrus, cumulus, stratus, and the nimbus clouds. Then ये याद रखना है, the first international cloud atlas was published on 1896. International Meteorological Organization (IMO) ने बना रहा है this international cloud atlas. So ये याद रखना है, the first international cloud atlas was on 1896, and the first division of cloud was made by 𝐬𝐿𝐻𝐿. He is the pioneer in classifying this cloud. ये cloud को पहले कौन classify किया है? 𝐬𝐿𝐻𝐿 ने ये clouds को पहले classify किया है, and he has divided the clouds into 3. One is stratus, then cumulus, and the cirrus clouds. So these are the 3 type of clouds that is been divided by 𝐬𝐿𝐻𝐿. अभी देखो पूरा इसमें सब आएगा, जो भी देख रहे, जो भी clouds if you are seeking, that will come under the scope of these 3 clouds. Stratus होगा, either it will be a stratus cloud, either it will be a cumulus cloud, or it will be a cirrus cloud. ये 3 group के अंदर ही होगा. It was been found out during 1896. That much of great innovation, not innovation, discovery was that he has made. So actually, when we say about the clouds type, these are the major clouds type which has been made by World Meteorological Organization. This consists of mainly 10 clouds होगा. पहले इसको डिवाइड किया है based on its height. High clouds, middle clouds, low clouds. High cloud होगा, middle clouds होगा, low clouds होगा. And this will be the combination of what we have studied earlier. इसमें cirrus clouds होगा, cumulus clouds होगा, nimbus clouds होगा, and stratus clouds होगा. So there is combination of these clouds. Major clouds, one is high clouds. This extends from 3 to 8 kilometers over poles, 5 to 13 kilometers over temperate region, and 5 to 18 kilometers over tropical regions. So these are high clouds होगा. As we know that pole में atmosphere का, अभी हमारा troposphere का, नहीं तो stratosphere का height तो कम है. Atmospheric concentration polar region में कम है. So the presence of cloud is also the same. इसमें high बोलने से भी maximum आएगा 3 to 8 kilometers, the highest clouds at the poles. And in the temperate region, that is the mid latitudinal regions, it comes between 5 to 13 kilometers.
and in tropical regions, so it is extended to 5 to 18 किलोमीटर के बीच में होगा these high clouds. So इसमें क्या होगा? One is cirrus clouds direct, second one is cirrocumulus, then cirrostratus. If you look, you can see the term cirrus. So the major cloud that is cirrus है, उधर cirrus clouds होगा, hairy structure होगा बोल दिया था cirrus का, लेकिन if you look, that is pure combination. But when we say about a high clouds, cirrus clouds, you can't find it in middle or lower में cirrus clouds का present आपको नहीं देख पाएगा. This is exclusively in high clouds. So it's a combination of cirrus cloud, pure cirrus cloud भी उधर है, इसके साथ cirrocumulus, cirrus plus cumulus clouds, उसका combination भी है. Then cirrus and the stratus. Stratus, oh yeah, stratus लिखा है, पहले में से है stratus clouds. तो इतना होगा high cloud में. Then comes the middle clouds. So middle cloud, it extends between 2 to 4 kilometer over poles. 2 to 4 kilometer, and 2 to 7 kilometer over temperate region, and 2 to 8 kilometer over tropical region. These are middle. So it extends between 2 to 8 kilometer. के बीच में जो cloud आएगा, that's we can say it as middle clouds. इसमें if you see two terms, one is alto stratus, alto cumulus. यहाँ cirrocumulus and cirrostratus. Instead here alto stratus and alto cumulus. Again one more, that is nimbostratus. Nimbus clouds, we know that this is a rainy cloud, and stratus, there will be strata. So stratified rainy clouds, we can say it as nimbostratus. वो भी है middle clouds के अंदर. तो सेम होगा, stratus भी है, cumulus भी है. stratus हो गया, cumulus भी हो गया, यहाँ भी stratus and cumulus है. तो cirrus इसके साथ आ गया. Instead cirrus यहाँ क्या है? Nimbostratus clouds है in the middle layer, and the average depth is 2 to 4 kilometer over poles, 2 to 7 kilometer over temperate region, and 2 to 8 kilometer over tropical region. And at the lower clouds, it extends from ground level to 2.5 kilometer. ये तो सब जगहों में average ऐसा है. Whether it is a pole, whether it is a temperate region, whether it is a tropical region, because we know that at the lower level the gravity is high. So thicker clouds, जो thicker clouds है, that is visible in the lower atmosphere में है. So it extends from ground level to 2.5 kilometer तक height में you can see. So which are the important one? See, देखो, one is stratocumulus, then stratus clouds, then cumulus clouds, and cumulonimbus clouds. If you look here, stratus clouds सब में है, लेकिन यहाँ देखो cumulus clouds का 1 cumulus, 2 cumulus and 3. तो यहाँ क्या था? alto था, यहाँ cirrus था, यहाँ cumulus था ज्यादा नीचे lower clouds में, because we know that this is in the shape of cauliflower shape में है, तो इसका density ज्यादा होगा उसी जगह पे. So it is mostly visible in this lower region. So इसके साथ stratocumulus है, then stratus clouds है, then cumulus clouds है, and cumulonimbus clouds है. Now we can look the characteristic of each of these clouds. So first one, cirrus clouds. If you look at this picture, you can see it's like a hairy band. Hair जैसा है ना इसका look. This is actually fibrous or silky hairy nature है इसका, and it is actually transparent color होगा, नहीं ये तो white color में होगा, and brilliant colors at sunrise and sunset. ये तो ऐसा है as it is transparent, white color में होगा, but if you look you can see the other portion also. It is transparent. Through the cloud we can see the upper part of the sky. Atmosphere का upper portion देख सकते हैं. तो in the evening and the morning क्या है? There will be the color change. वो atmosphere का color change है. अभी देखने से it will be like red to orange color होगा. So through this, if we look this cirrus clouds, it will be very beautiful. इसमें brilliant colors आ जाएगा.
इसका ट्रांसपेरेंसी के वजह से, even though its look actual color is white and transparent है, but ऐसे वो as it is transparent also, वो पीछे का जो sky का color है that is also visible. That is why it is written it has brilliant colors as sunrise and the sunshine. Then it represents a dry weather. उसी टाइम में उधर मॉइस्चर कम होगा उसी टाइम में. इफ यू लुक दिस इज ट्रांसपेरेंट ना, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन ज्यादा नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज लुक्स एज हेयर इन नेचर. सो इट रिप्रेजेंट ए ड्राई वेदर. ओनली ड्यूरिंग ड्राई वेदर यू कैन सी दिस cirrus clouds at the top of the, and these are high clouds I am saying about. Then comes the cirrocumulus clouds. This is actually small flake or small rounded puffs जैसा है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा pieces होगा. That usually appears in long rows high in the sky. एक layer जैसा होगा and it has a flakes like a egg shape होगा. And usually it appears as white color. Usually it is in white color में है, but sometimes you can say it is a gray in color भी इसका आ सकता है, but usually it has white color. And cirrocumulus are common in winter season में, एक common है, indicate a fair but cold weather. तो दोनों cirrus clouds and cirrocumulus indicates dry weather है, clear weather है, but cirrocumulus is usually visible in winter season में है. If you look at this, you can see ऐसा ऐसा फ्लेक्स है, बहुत कुछ फ्लेक्स you can see यहाँ. अभी देखने से ऐसा ग्रुपिंग कर सकता है. That is called cirrocumulus clouds. appears का कैसा है? It appears in winter season. Then comes cirrostratus clouds. Cirro silky layer है, silky like hair like है, and इसके साथ stratus layered भी है. If you look, you can see the same. यहाँ layered भी है, transparent है, ये इसका तो shape तो transparent भी है. The upper atmosphere. This also shows a clear sky. Usually clear sky को देखते हैं. And it appears in milky thin sheets है, milky almost white in color है, thin sheets है, transparent भी है, almost transparent है. Composed of tiny ice crystals, creates halo when reflected. Halos इसका तो reflect, अभी sun इसमें reflect करने से इसका साथ में ऐसा halo you can see. And mostly transparent in nature है, cover large area of the sky. पूरा अभी एटमॉस्फेयर में पूरा एरिया में ये एक्सटेंड कर सकता है. So all these cirrostratus, cirrocumulus and cirrus clouds, all these shows a clear sky. Clear sky को ये represent कर रहा है. And all these are white in color. If commonly we can say white in color है, but the difference is its shape. One is thin cirrus clouds ऐसा hairy shape है, cirrostratus भी ऐसा hairy होगा, but there will be layers होगा. cirrocumulus में क्या है? flake जैसा है, flakes. And cumulus का ऐसा accumulation, clouds का accumulation होगा इसमें, तो flake की तरह का accumulation. तो देखने से एक bunch of ये cotton जैसा लगेगा, bunch of cotton. लेकिन instead if you look others, these are feeble है, इसमें feeble है, ऐसा cotton जैसा नहीं लगेगा. That is the difference between cirrus and cirrocumulus. Cirrostratus and cirrocumulus almost feeble है, but cumulus बोलने से that is why it shows different characteristics. Then comes to the middle type. तो middle height का, average height का जो clouds है, first is altostratus, then altocumulus, then nimbostratus. तो alto आ गया इसमें. So it provides altostratus का ऐसा है, it provides drizzles and freezing drizzles. Freezing drizzles we have studied. अभी drizzles बोलने से 5 mm के नीचे जो छोटा water droplets है उससे बारिश आता है तो we can say it drizzles. But freezing drizzles कैसा है? Instead of water there will be ice.
or snow. Then we can say it as freezing drizzle. So altostratus can provide both these. Drizzles भी दे सकता है और freezing drizzles भी. अभी इसमें देखो nimbus का नाम नहीं है, बाकी सब में nimbus आ जाएगा, लेकिन altostratus में nimbus ऐसा कुछ word नहीं है. So this is also a rainy cloud, but not shower like rain, but it will drizzles. And as the name indicate, it has layers. शीट ऑफ फीचरलेस है, ग्रे क्लाउड्स है. अभी देखो कुछ ऐसा शेप का है, ऐसा नहीं बोल पाएगा, एक्युमुलेटेड है नहीं, ये तो हेयरी है ऐसा, और फ्लेक शेप है ऐसा, कुछ नहीं बोल पाएगा. दिस कैन बी सीन इन एनी फॉर्मेट, एनी फीचर, बट द थिंग इज दैट इट विल हैव ए लेयर. अभी इसमें देखो ऐसे एक लेयर बन गया है, लेयर्ड है, and this is actually brown in color, just like the nimbus clouds. So these are altostratus clouds. And these sheets, thick sheets, sun and moonlight, ये तो ऐसा है, ये obstruct करेगा. sun का और moon का जो light है इसका तो ये obstruct करेगा. And इसके पीछे जो sun and light है, it appears like a bright spot जैसा लगेगा. अभी इसमें ऐसा वाला क्लाउड में इफ यू लुक एट दिस स्काई, यू कैन सी देयर विल बी अ व्हाइट कलर्ड ब्राइट स्पॉट होगा ऐसा. अभी हम लोग भी सोचे सन तो व्हाइट हो गया, तो ऐसा सोच इस क्लाउड के पीछे होगा सन. So that is altostratus clouds. Then altocumulus clouds. So this is in the middle layer. Cumulus means there will be particular कॉलीफ्लावर जैसा एक शेप होगा. यहाँ है देखो, इट्स अ वेवी लेयर एंड हैव ज्योमेट्रिक पैटर्न, यूजुअली इन लीनियर शेप का. अभी देखो यहाँ क्यूमुलस है तो इट विल बी कॉलीफ्लावर जैसा, लेकिन इसका एक लीनियर एक्सटेंशन है. अभी देखने से यू कैन सी दिस इज बी एक लीनियर पैटर्न इसमें देखेगा, लीनियर एक्सटेंशन इसमें देख सकते हैं ऐसा. So that kind of clouds we can say it as altocumulus clouds. Usually it is also known as sheep clouds because sheep का जो skin है, these clouds look like the same. Sheep का जैसा skin ऐसे हवा में उड़ते समय जैसे लग रहा है, ऐसे ही this will be appear. So that is called altocumulus clouds. Then the final one, that is nimbostratus clouds. Nimbostratus clouds are dark color. Nimbus बोलने से you can easily write this is dark color. Cumulus बोलने से you can write it is a bunch of cotton जैसा होगा. ये दो याद रखना है. और cirrus बोलने से this will have a hairy shape होगा. And stratus बोलने से there will be strata, there will be layers. ये general characteristic है. तो इसके साथ if you add alto बोलने से this will be middle clouds. And cirrus बोलने से that will also comes in the high upper atmosphere में और upper sky में होगा. So you can directly from the term is the name itself you can define many characteristics of these clouds. So nimbus stratus में there will be nimbus बोलने से it will be dark. Second it will be layered. Yeah, खुद से बोल सकते हैं easily you can say. Then almost close to the ground, but I said it extends from 2 to 5 किलोमीटर 2 to ऐसा है, डिफरेंस है. मिनिमम आता है 2 किलोमीटर तक. इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द ग्राउंड है. एंड देयर विल बी copious precipitation. That means there will be enough more high precipitation भी इस क्लाउड देगा निम्बस स्ट्रैटस क्लाउड में. तो निम्बस क्लाउड्स होगा, लो क्लाउड ऑलमोस्ट लो क्लाउड होगा, डार्क होगा, स्ट्रैटिफाइड होगा, एंड दिस विल गिव precipitation. So these are the major characteristics of nimbostratus clouds. So इसमें क्या क्या आएगा? Altostratus, altocumulus, and nimbostratus clouds. And finally, that is strato. ये हो गया. We have the lower clouds. Lower layer में जो clouds है, that includes stratocumulus clouds है, stratus clouds है, cumulus clouds है, nimbocumulus clouds है. These are the 4 type of lower layer clouds. इसमें होगा first one stratocumulus. So as the name indicate,
stratus, there will be layer. Cumulus means it looks like a bunch of cotton. Usually it has gray to white color. इसका gray to white color होगा stratocumulus का, and it extends from 2.5 kilometer to 3 kilometer. As this is lower layer cloud formation, maximum इसका kilometer average extension होगा 2.5 from the ground level से. तो stratocumulus is also same. अभी देखो cumulus, इसमें बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये तो बहुत ऊपर तक जाने के लिए इसका तो मुश्किल है. दिस विल बी नियर टू द सरफेस. डेंसिटी इसका ज्यादा है. देन रोल्स विच आर अरेंज इन लाइंस, वेव्स और ग्रुप में होगा. इसका ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर होगा. प्लेस बोल दिया ना, इसलिए तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ना ये तो वेवी स्ट्रक्चर होगा, ना ये तो ये ग्रुप ऐसा ग्रुप. You can see this as group. So ऐसा भी structure में you can see the stratocumulus clouds. Then comes the stratus clouds. Dense fog-like cloud है, low-lying clouds है, a fairly uniform base है इसका, and presence of stratus clouds means there will be chilly or overcast day है. अभी जितना भी बोल दिया है stratus cloud के बारे में बोल दिया है, we have mentioned that has a layer. But when we come to the pure stratus clouds, yes, of course there is layer, but it is not that much visible. But instead, it looks like fog. जैसा अभी winter season में when we are driving, we can feel fog देखेगा ground में. But when this fog in the upper atmosphere, we can say it as cloud. तो ये नीचे नहीं होगा, सरफेस में नहीं होगा, ये ऊपर होगा. तो ऐसे वाला fog like structure को, along with that it will have a dark color होगा. Then we can say it as stratus cloud. It is low lying है, it will looks like dense fog. It will looks like dense fog. अभी जब जाता है क्लाउडी एरिया में जाता है, तो नहीं, ये तो अभी ईटानगर का वो वेस्टर्न एरिया में हम लोग देखने से यू कैन सी द accumulation of such kind of atmosphere. So that is actually the stratus cloud formation, and it usually shows cold climate होगा, and it will be overcast. Overcast means there will be high chance of precipitation है इसको stratus clouds को. And finally, the cumulus and the cumulonimbus clouds. Cumulus clouds looks like this. This is just like अभी हमारा जो cauliflower है, same structure में होगा, very thick होगा इसका carrot, very thick. बहुत कुछ water particles इसमें होगा, but not reach up to the saturation level. Saturation level के बारे में हम कल बोल दिया था, जो for precipitation, the air should be at saturation level. Maximum amount of water molecules उसमें होनी चाहिए. That will be fall down. That has the ability to fall down. वो updraft का cloud updraft का overcome करके ये तो जाने के लिए जो है वो उतना सा water body चाहिए. Then only that we can say that the air is saturated, fully saturated with water molecules. लेकिन यहाँ cumulus clouds ऐसा नहीं है, but there will be huge amount of water droplets. It appears as dome shape. Dome means ऐसा shape को we can say it as dome shape. So this cumulus shape also resembles the dome shape. It is dense and the white clouds है इसका. And it also shows fair weather है, but sometimes convert to thunderstorm because इसमें बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है, so बाद में क्या होगा, it has high chance of converting that to nimbus cloud. Cumulonimbus होने का chances इसमें बहुत ज्यादा है. That why we can't, even though the cumulus shows a fair weather, good weather, but there is high chance of converting that to thunderstorm. They look like cotton, and whatever it is, they have a flat base होगा.
ऐसा होगा इसका शेप, तो बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इन द सरफेस है, तो ऑलमोस्ट द बॉटम लेयर ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलस क्लाउड्स। एंड फाइनली द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलस का पूरा कैरेक्टरिस्टिक होगा, along with that nimbus, as I said, there will be high chance of precipitation। अभी देखो पूरा ऐसा शेप में है, even you can see the dome shape of cumulus, ये भी है, but if you look the color difference, you can see the dark color here। Dark color means there will be nimbus, only the altostratus has that, don't have that characteristic। So it is thunderstorm cloud है ये तो, and produce heavy precipitation है, and considerable vertical extension है, वो नीचे से ऊपर तक बहुत extend होगा इसका। and this always show a, अभी जो cloud है हम जो अभी रेनी सीजन में जो क्लाउड हम देखते हैं ब्राउन कलर डार्क ग्रे कलर में, दैट इज एक्चुअली द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। सो दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये 10 क्लाउड्स आप याद रखना है। दिस इज द मेजर टाइप ऑफ क्लाउड्स। तो इतना सा है क्लाउड्स के ऊपर। इस एरिया में कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अभी ये 2 यूनिट का सर अभी नोट दे रहे हैं क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिए सर। ओके, मेरे लिए तो अभी टाइम नहीं मिल रहा था, हम नहीं तो हम खुद से बनाना था। ठीक है, देखेगा। ओके, डोंट वेरी, थोड़ा वेट करो, नहीं है तो हम खुद से देगा। ओके जी सर। सर हाँ, आप ऑफलाइन भी पढ़ाता है? ऑफलाइन अभी तक नहीं पढ़ा है, जो सर बोलेगा ऐसा ही करेगा। वो ओके सर। पंकज सर है ना, करना है तो कर देगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके हम नहीं पहले, पूछ रहे सर। ओके ठीक है, तो कल वी कैन स्टार्ट ओशियनोग्राफी। ओके सर, थैंक यू सर।